हम जब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे कि इफ यू गो टू जूनागढ़ एडिक्ट और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, किसके किसके हैं? अशोका, रुद्रदमन एंड स्कंदगुप्त, नॉट समुद्र, स्कंदगुप्त. इफ यू गो टू अलाहाबाद पिलर और यहाँ पे या अशोकन एडिक्ट्स ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स, कम से कम 3 टाइप के हैं. वी हैव मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड वी हैव 2 डिफरेंट माइनर पिलर एडिक्ट्स. एक अशोक की रानी है कुरवन की, उसका भी है, और एक तीसरा भी है. 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ एडिक्ट्स of which the first set is the major pillar edicts. कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ. That is one. Apart from Ashokan edicts, you also have Prayaga Prashasti of Samudragupta, and then Mughal. Why I will tell. Because in this era we have one edict, 2-3 है इसमें भी, 2 फेमस इसमें कौन से? एक जहांगीर का एडिक्ट है, जहांगीर इंस्क्रिप्शन, एंड देयर इज बिरबल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो. बिरबल का महाघमेला इंस्क्रिप्शन है कुछ, ठीक है. Apart from that, which one do we see otherwise? We have this is the story of inscriptions, and then we just now saw we have Delhi Topra, we have Ashok and Vigraha Raja or Visal or Bisal Dev, Chauhan ruler. Then the other set of stories are the stories about the movements of the pillar from one place to other place. Those are also very interesting. Who moved which pillar, where and why? For example, Gupta era pillar of Mehrauli today was not at Mehrauli originally. It was supposedly at other place, maybe Udaygiri, possibly. Somebody brought it here. Similarly, the Ashokan edicts of Delhi Meerut and Delhi Topra, they were not in Delhi. वो थे मेरठ में और टोपरा में. They were brought to Delhi by whom? Firoz Shah Tughlaq. And apart from that, we also have this Allahabad pillar. We sometimes Allahabad Kaushambi pillar बोलते हैं उसको. क्यों बोलते हैं Allahabad Kaushambi? Because आज के दिन में वो कहाँ पे पता है? We cannot see that. It is inside Allahabad Fort. Allahabad Fort किसने बनाया? बादशाह अकबर. So उसने तो जगह देख के नहीं बनाया होगा, उसने would have constructed a logical place जहाँ पे डिफेंडेबल हो. तो how come the pillar is inside the fort where you and me can't go? It's an army control. मैंने सुना है. हमने नहीं, मैंने तो देखा नहीं है आज तक. We see photos which are like 100 years old photos. I somehow found recently एक फोटो जो पिछले 15 साल में खींचा गया है, फोटो भी नहीं मिलता उसका. It's in cantonment area now. आर्मी के पास फोर्ट का एरिया है वो. So why this pillar went into the fort of Akbar? Some people claim it was not in Allahabad. It was not a place. It was in Kaushambi. From Kaushambi, Akbar possibly brought it to Allahabad. So इसका नाम है Allahabad Kaushambi pillar. The first name is present location. The second name is the original location. Delhi Meerut, Delhi Topra, Allahabad Kaushambi, etc. ठीक है. So we have the stories of the movements of pillars also.